Hello everyone and welcome back to our YouTube channel, Humanities Atta. So we have already done two lectures for challenges of nation building, class 12 political science crash course. So this is the first chapter that I am dealing. Okay, and दो lectures इसमें से मैंने already करा दिए. अब इसमें हमने already क्या क्या कर लिया तो वो हम देख लेते हैं. I have told you the study plan that I'll first deal with introduction, then we will talk about the three challenges. ये दोनों aspects हम देख चुके हैं. Now the third aspect that we are going to do today is partition, displacement and rehabilitation. तो ये वाला जो aspect है partition वाला ये हम आज देखेंगे. So introduction, you can just watch the first lecture where I have discussed some extra topics also, not extra topics but topics that you need to know. Then I have told you the first challenge, second challenge. I gave you some kind of a homework also, third challenge. And then now it's time to move on to the next topic, that is partition, displacement and rehabilitation. So why we are doing this, because we have seen that among all the three challenges that India faced after independence, straight after independence, India के independence के बाद जो हमने तीन challenges को deal किया था, उसमें से सबसे important challenge जो था वो first challenge था. That was the unity and integrity of the nation, how to unite India and how to make it a one nation, united nation. Okay, so इसी first challenge के respect में we deal with this topic, partition, displacement and rehabilitation. So now I have taken all these things from your NCERT. So once you are done, you can just go through this lecture. You can go through in your go through your NCERT once. So यहाँ पे हमारा topic जो है partition, displacement and rehabilitation. First point it says कि 15th, 14th, 15th August के जो midnight में Indian Pakistan जो है they came into existence, and this was result of partition, that two nations were formed. The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments. तो जो भी political developments हो रहे थे इस front पे, partition के front पे, even जब आप partition की history पढ़ते हो, you try to understand the causes behind it, कि how this movement slowly and gradually began and demand for Pakistan was put forward by the Muslim League and by, you can say, Jinnah. तो वो सारे जो जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हम देख रहे थे उसका ये कल्मिनेशन पॉइंट था कि हमारा जो बॉर्डर है वो डिमार्केट हो गया था. अब बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए वी हैड दिस रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन. ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, तो रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी. एंड देन यू हैव द रैडक्लिफ लाइन. तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है, जो बीच का जो बॉर्डर है, उसको हम रैडक्लिफ लाइन से बोलते हैं. एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 17th August 1947. इस कमीशन ने एक लाइन डिसाइड की एंड वो फिर एग्जिस्टेंस में आता है ऑन 17th August 1947. You can see here the image is not clear, but even then you can see कि इधर हमारे western side में भी Radcliffe line है, and in the eastern side we also have the Radcliffe line. Why? Because we have initially we had West Pakistan and East Pakistan. ये again the same image is here. Okay. Now two nation theory के बारे में अगर हम बात करें तो ये according to two nation theory क्या था कि this was advanced by the Muslim League. Muslim League के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना कि कब फॉर्मेशन हुआ था इसका, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट वर द रिलेटेड डिमांड्स एंड ऑल. तो ये आपके हिस्ट्री का पोर्शन खैर हो जाता है, इट constitutes of your modern history and you are not supposed to do in your 12th, but even then you can just look into it. Then इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग इंडिया जो है, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल. तो दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल कंसिस्ट करती थी इंडिया, हिंदूज एंड मुस्लिम. सो दे स्टार्टेड सेइंग दीज थिंग्स. टू नेशन थ्योरी का ये कहते हैं कि ये यू कैन से कि दिस वाज व्हाट दे एग्जैक्टली वांटेड टू कन्वे, कि जो इंडिया है वो एक यूनाइटेड लोगों से नहीं बनी हुई. इंस्टेड यू हैव टू काइंड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. One population is Hindu, second is Muslim. Now Congress ने अपोज किया initially, you will see this theory and demand for Pakistan को. At the end तक ये डिमांड जो है पाकिस्तान की, इसको अपोज किया जा रहा था. But you will see कि several political developments in 1940s and the political competition between Congress and the Muslim League and the British rule, it led to the creation of Pakistan finally. Okay, and you have the ending में you have the Mountbatten plan, Lord Mountbatten plan के बारे में
आप देखते हो कि उसके बाद ही ये पार्टीशन का जो फाइनल डिसीजन है, कांग्रेस फाइनली अग्रीड टू इट। बैकग्राउंड अगर हम देखें, ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, नेक्स्ट टॉपिक यू हैव प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की डिमांड है, रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हमें लाहौर के सेशन में 1940 में, मुस्लिम लीग का सेशन था 1940 में, देखने के लिए मिलता है। एंड दे पास्ड अ रेजोल्यूशन एंड दे वांटेड ग्रुपिंग ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्टिजियस एरियाज व्हेन मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी। तो ऐसे एरियाज को वो चाहते थे कि उनको एक साथ कर दिया जाए जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से 1940 से, यू विल सी द मूवमेंट। इससे पहले काफी कम्युनल पॉलिटिक्स चलती है, दोनों ही साइड से थोड़े बहुत टेंशंस होते हैं, दैट द मुस्लिम्स दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कांग्रेस एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। तो सेशंस होते थे उसमें, फिर दे हैड सर्टेन देयर ओन काइंड्स ऑफ डिमांड। एंड व्हेन यू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बाद जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया था, वो उसके बाद से ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, इट kept on increasing, and by the end of 1940 you see that the demand for Pakistan was there. फाइनली माउंटबेटन प्लान जो 1947 में आता है, ये अप्रूव करता है पार्टीशन की। इसके पहले भी काफी सारे आप देखते हो, कैबिनेट मिशन वाज देयर, क्रिप्स मिशन वाज देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिप्स था, देन यू हैव द कैबिनेट मिशन, दे आल्सो दे काइंड ऑफ did not approve, but yes, they somehow let put the seeds of these kind of पार्टीशन वाली चीजों के बारे में, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जब बात कर रहे थे, तो इन चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं फोकस में लाया। तो यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि माउंटबेटन प्लान 1947 में पार्टीशन के अकॉर्डिंग पार्टीशन को अप्रूव कर दिया गया था। एंड इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। ऑन व्हाट बेसिस दिस पार्टीशन हैपेंड? पार्टीशन हुआ किस बेसिस पे था? रिलीजियस मेजोरिटीज के बेसिस पे, कि जिन एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटीज हैं उनको वो पाकिस्तान बनेगी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाला जो पॉइंट है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, दिस इज एक्स्ट्रा। माउंटबेटन प्लान भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला हुआ है। यू कैन जस्ट गूगल अ लिटिल बिट अबाउट इट, बिकॉज लिंकेज इस तरीके से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, एंड लिंकेजेस विल बी देयर। तो यहाँ तक हमने देखा, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन चल रहा था और जो डिसाइड किया गया कि रिलीजियस मेजोरिटीज के बेसिस पे हम इंडिया को डिवाइड करेंगे इनटू टू नेशन, दैट वाज टू बी इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डिफिकल्ट था बिकॉज देयर वाज सर्टेन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट क्या था कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। तो कोई ऐसा एक सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नहीं था जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स हो। टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक वेस्ट एरिया में, हमें वेस्ट ब्रिटिश इंडिया में देखने के लिए मिलता है, एंड अदर वी सी इन द ईस्ट। एंड देयर वाज नो वे कि इन दोनों ही पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, बिकॉज ओवरऑल द होल इंडिया विल बी इन बिटवीन। बिकॉज इस साइड पे हम देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान जो बनता है नाउ प्रेजेंटली, जो बांग्लादेश है, वो आपके ईस्ट में था। देन यू हैव द वेस्ट साइड पे आपके ये नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड ऑल दैट एरिया। तो एक तरीके से आप देखो कि बीच में काफी ज्यादा जो है स्पेस है, बहुत ही एरिया है, गैप है, डिस्टेंस है, एंड कोई एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। सो इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान जो है वो टू टेरिटरीज कंसिस्ट करेगा, एक होगा ईस्ट एंड द अदर विल बी वेस्ट पाकिस्तान। नाउ सेकंड हम देखते हैं कि जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांस था वो था कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब सारे ही मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऐसे नहीं थे कि दे वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है खान अब्दुल गफार खान, जो लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थे, आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। He staunchly opposed the two nation theory. So he was against this. He did not want to join Pakistan. और but even then you see कि इनकी जो वॉइस है इसको इग्नोर कर दिया गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम जो हम देखते हैं इस प्रोसेस में, कि जो टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो पंजाब और बंगाल वाला रीजन था, दे आल्सो हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। सो वी आर, अभी तक हमने बात किया कि मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज है वो पाकिस्तान बन जाएगी, बट व्हाट अबाउट दोज इन्हीं एरियाज में बंगाल एंड पंजाब एंड बंगाल वाले एरिया में जो नॉन मुस्लिम्स रह रहे थे, उनका क्या होगा? द नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज हैं, उनका क्या फेट होगा? सो इट वाज डिसाइडेड कि ये जो दो प्रोविंसेस हैं
इनको बाइफर्केट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल. एकदम लोअर लेवल पे जाने के बाद इनको बाइफर्केट, मतलब एट द लोएस्ट लेवल दे विल बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटीज. तो जो पाकिस्तान जो मुस्लिम मेजोरिटी होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया जो है वो इंडिया में आ जाएंगे. बट दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द 14th और 15th अगस्त. तो ये 14th 15th अगस्त को जिस दिन द टू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये डिसीजन नहीं लिया जा सका था उस टाइम तक. इट वाज नॉट डिसाइडेड बाय देन. So partition of these two province caused deepest trauma because you will see कि आपको पता ही नहीं है कि whether you belong to India or whether you belong to Pakistan, and this led to a very chaotic situation and a lot of violence took place because of this situation. देन फोर्थ प्रॉब्लम अगर हम देखें, द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर. अब आप देखो कि पार्टीशन तो हो गया, मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया चले गए पाकिस्तान में, एंड देन यू हैव द नॉन बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज वी हैव इन इंडिया. बट इवन देन यू सी दैट द मेजॉरिटी माइनॉरिटीज वर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर. तो इनका इनका क्या फेट होगा? They became undesirable aliens in their own land. So imagine that you're living in a land for centuries, and your whole generation was there, and suddenly one day someone tells you that you do not belong to this land, you are an alien here. So this was the kind of shock that the partition brought along with it for the for the population, for the minorities, and they became easy targets of attack. तो ये जो minorities हैं targets of attack बन चुके थे, because you see the communalism was on peak. नो प्लान, कोई भी ऐसा प्लान नहीं था. नो प्लान वाज पुट इन प्लेस टू हैंडल दिस सिचुएशन. जो ये सिचुएशन अराइज हुई थी, ऐसा एंटिसिपेट ही नहीं किया गया था. सो देयर वाज नॉट अ नो काइंड ऑफ, एक हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट प्लान इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं था उस टाइम पे. एंड माइनॉरिटीज एट दी एंड दे हैड नो ऑप्शन बट टू लीव देयर होम्स. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उनको अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है. दे हैड टू क्रॉस द बॉर्डर्स एंड देन सेटल ऑन द अदर साइड. अब है नेक्स्ट की ये एक अनदर डीपर इशू पोज करता है. द इशू वाज दैट कि लीडर्स, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बिकॉज पाकिस्तान वी नो दैट दे वांटेड ऑल द मुस्लिम पॉपुलेशन देयर, बट इंडिया के केस के बारे में, अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो वी हैड फ्रॉम द बिगिनिंग जो इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल स्ट्रगल है उसमें कुछ वैल्यूज थे. कुछ हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन वैल्यूज वर देयर व्हिच every leader wanted to adhere to it, and everyone actually believed in it. सो अब इंडियन नेशनल स्ट्रगल के लीडर्स जो हैं, उन्होंने, उनका तो ये बिलीव नहीं था. दे डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, एंड येट उसके बाद भी आप देखते हो कि पार्टीशन हो जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन वाज कि डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली, बिकॉज पाकिस्तान वाज अ मुस्लिम नेशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो क्या इंडिया भी सिमिलर लाइंस पे एक हिंदू नेशन बन जाता है? ना इन दिस होल क्वेश्चन यू विल सी दैट उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, उस यहाँ पे माइग्रेशन होने के बाद भी जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, when they migrated to Pakistan, Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. So still the population was considerable in Indian territory, and the question was how the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities. So when we talk about minorities, it's not only about the Muslims. You have other religious minorities. For instance, you have Sikhs, Christian, Jains, Buddhist, Parsis and Jews. तो ये सारे ही minorities हैं. How we are going, how India as a nation is going to, or how the government of India is going to treat them, it was a question. Okay, it was a question that arose at that time during the partition. Now, consequences of partition, just a second. Yeah. Now we will deal with the third topic in the the next topic in the partition, that is consequence of partition. तो consequences क्या हुए partition की? First, you have that a large number of population transferred from one side to the other side. Transfer of population was there. Killing and atrocities on both the sides was there. अब देखो, cities like Lahore, Amritsar, Kolkata, they became divided into communal zones. So again, there was this kind of violence, communal violence. People were forced to abandon their homes.
Minorities on both sides took shelter in refugee camps, and certainly you will see at certain point they had no place to go, and they became, kind of refugee in other countries, other nations. Sorry, the people coming from Pakistan, they became refugee in India, and then on vice versa. Then you see unhelpful local administration, because local administration also got kind of, divided into this politics. So they were also not helping the other people, the minorities on both the sides. And even during the journey they were attacked and killed. तो जितने भी population का जो transfer हो रहा था उसके time पे भी हम देखते हैं कि attacks, killing हो रही है. Many who did not cross the border had no home, so they did not have any kind of home जो border cross नहीं कर पाए, for instance. And even if they, cross the border, they had no certainty of, for हम अगर देखें तो पाकिस्तान में तो ये certainty थी that you will be, accepted, but on the other side India में जो उधर से minorities they were coming, they were also accepted, but certain Muslim population they also came. So this was a situation like very chaotic situation. What kind of transfer of population took place, what was the, the overall situation there, that is very difficult to imagine. तो हम यहीं पे ये सारी चीजें देखते हैं कि लोगों ने अपने घर छोड़े, रेफ्यूजी कैंप्स में इन्होंने शेल्टर लिया. Now, women and children specific issues, अगर हम देखें, why we are dealing with women and children specific issues, why I've created this heading is to make you understand that whenever a conflict arises or whenever there is a situation like war, women and children they face different kinds of, atrocities. They face different kinds of, you can say, क्राइम्स. तो जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं. लाइक women raped on both sides, so women they were raped on both sides, and this is very gender specific. Even now it happens when you look at the, contemporary world. तो किसी भी conflict areas में जाओ आप, तो the जो military है other side के, they are invading, if they are targeting one nation, other nation. So they will be doing these kind of activities, the raping women on the both sides, and abducting them, and so on. So thousands of women were abducted on both sides of the border, and they were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. So this, the male, they also faced kind of atrocities, but that was kind of, direct killing, and उनका सीधा मर्डर हो जा रहा है, मार दे रहे हैं लोग. दैट वाज अनदर काइंड ऑफ, बट यहाँ पे अगर हम विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेसिफिक इश्यूज को थोड़ा बहुत डील करें तो यू सी दैट ये जो सिचुएशन है, फोर्स इनटू मैरिज में इनको फोर्सफुली एंटर कराना, देन यू हैव द ऑनर किलिंग्स हैपनिंग एट अ लार्ज स्केल. इफ यू जस्ट गूगल इट एंड यूट्यूब दीज थिंग्स कि ऑनर किलिंग्स किस लेवल पे हुई थी, you will understand the situation. Okay, and then children separated from their parents, children were also, kind of separated from their parents. So these are certain issues that you can say that were gender specific. Okay, now consequences of partition. Next is what, अगर हम next topic आगे की बात करें, नेक्स्ट इशू, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये सिर्फ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, असेट्स का डिवीजन नहीं हो रहा था और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री नहीं था. एंड ये सारी चीजें तो एट द एंड डिवाइड हुई ही थी. एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस गॉट डिवाइडेड, properties, liabilities, assets, political division took place. But apart from that, financial assets like small things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments of the police band also got divided. So all these things also got divided. Employees of the government and railways were also divided. And now you have certain data over here that it is estimated that partition forced about 80 lakhs people to migrate across a new border, and then 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. And there are many stories that you can, just go through and understand and learn about the experiences of the people. Now, Muslim League, यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ये जो फॉर्म हुआ था, इसका मेन एम था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन colonial India. This is given in your NCERT, and it was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, we will see that there were certain organizations which were trying to organize Hindus in order to turn India into a Hindu nation. This happened lately in the, the last phase of our
you can say the national struggle, Indian independence struggle के last phase में ये चीजें develop हुई थी, that the Muslims, they wanted Muslim nation, but on the other hand, certain factions and certain organizations were there. They wanted to organize Hindus in order to turn into India into a Hindu nation. But we will see that most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions equally. हमारे ये बिलीव था, ये वैल्यूज थे नेशनल मूवमेंट के, कि इंडिया जो होगा, इंडिया नेशन एज अ नेशन, व्हेन इट विल बी देयर, इट विल ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल religions equally. And India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. So you will see that in case of citizenship, when we talk about, so we do not see citizenship on the basis of religion. We have other, kind of criterias, but religion is not one. All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation. So you have article fundamental rights, अगर आप देखो 15 है, 14 है, 15 है, and religion, another factor, another important point is that religion would not be a test of citizenship. So to attain citizenship of India, you do not need to have a kind of particular religion. So there are certain, others, I'm sorry, so sorry, there are certain articles, in the constitution, particularly article 5 to 11, which talks about citizenship till 26 January 1950. But after that, it is, governed by the Citizenship Act of 1955 and its various amendments. The recent one, you have seen that जिसमें हमारा इशू बहुत काफी ज्यादा यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए थे 2019 के जो अमेंडमेंट्स हैं, just go through that amendment once and you will understand the, काफी different amendments हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट में. लास्ट 2019 में हुआ है. CANRC का जो काफी इशू चला था, and they cherish the idea of secular nation. So Indian leaders जो थे, leaders of the national movement, they cherished this ideal of secular nation. Secular nation here means that, every person of every person is equal irrespective of his or her religious affiliation. And this ideal was enshrined in the Indian constitution. You can see that, through various fundamental rights, you have the DPSPs and etc etc. Okay. And then you have particularly that the state is not going to have a religion of its own. So there are articles related to the religious rights also, but that still makes, those articles combined together makes our nation a secular nation. Okay, so particularly if we talk about articles, so you can look at article from 25 to 28, religious rights are there, and you will understand. And then there are obviously 14, 15, 19, 16, 17, 18. Okay, all the fundamental rights somehow, not all, but some of the fundamental rights, particularly from 25 to 28, they talk about the religious rights. And then article 14 and 15 is important. Okay, so then you have Mahatma Gandhi's sacrifice. एक अलग से बॉक्स है जिसको हम अलग से I'll do in next lecture. And you have to understand that writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan, they have expressed the ruthlessness of the killings and sufferings of displacement in their novels, short stories, poems, and films. So you have a lot of, fiction and non-fiction in these areas. Obviously, most of these things are non-fiction only, and you have novels, short stories, poems, movies even based on partition. Okay, one of the movie that is mentioned in your book is Garam Hawa. So if you want to watch it, you can watch it and you can understand the, the situation during the partition. Okay, so thank you so much for this, for watching this, and I hope that you are following the lectures, because see, these are not your summary lectures, but I'm trying to explain everything as much as I can in detail. And then we will move on to, when we finish the chapter, we will be doing the PYQs also from this chapter. Okay, next video I'll be uploading. The topic will be partition as a project. So how can you deal with partition? How can you take topic of partition as your assignment or as your project for your class 12?
political science. Okay, so thank you once again. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel.